हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर वाइज। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2025 के चैप्टर वाइज सीरीज का जो पीवाईक्यू का सीरीज हमारा चल रहा है जीएस प्रीलिम्स के लिए, उसका सब्जेक्ट पॉलिटी। ठीक है, हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। हम सभी सब्जेक्ट्स का देख चुके हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड ऑल सारे सब्जेक्ट्स का हम 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आपको अगर उन वीडियोस को देखना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जो फ्री में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो इस पॉलिटी के सब्जेक्ट में हम क्या-क्या देखने वाले हैं और इस पूरे वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये चैप्टर वाइज़ है, तो 2025 में प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन्स आए थे पॉलिटी से रिलेटेड, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ये चैप्टर वाइज़ सीरीज़ है, ऑब्वियसली मैंने बता रखा है पहले ही पीवाईक्यूज़ के लिए। इसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस देंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ आपको क्वेश्चन का एक आंसर बता दिया जाएगा एंड दैट्स इट। नहीं, ये प्रॉपर सॉल्यूशन वाला वीडियो है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के सारे चारों ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा, चाहे करेक्ट ऑप्शंस के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा एंड इनकरेक्ट ऑप्शन से भी रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आए या बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कभी दूसरा क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट ईयर, तो आप उसमें भी आंसर कर सकें। एक एनालिसिस देखेंगे हम, कितने क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी में एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी कितने आते हैं वो सब कुछ, एंड इसका सब सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले एनालिसिस में बता दूं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 2025 में। इवन करंट अफेयर्स में भी कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस समय अगर हम देखें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपका 11 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें कि पॉलिटी से करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल मिला के 16 होते हैं। हम ऑल 16 क्वेश्चंस, वो करंट अफेयर्स वाले भी 5 क्वेश्चंस और डायरेक्ट जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से मिले हैं 11 क्वेश्चन, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न हम इस तरह रखेंगे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कौन-कौन से टॉपिक्स है वो बता देंगे एंड आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि मेन एम यही है कि आप प्रैक्टिस कर सको इन पूरे सीरीज़ से। तो जब भी आप अपने किसी एक नोटबुक में क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने ऑप्शंस को बता सकते हो, आपने क्या-क्या ऑप्शंस चूज़ किए थे पूरे थ्रू आउट द सीरीज़। तो इसमें आप जो भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को रखोगे, वो आप सेलेक्ट कर लेना, देन हम मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ, फिर आप देखोगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है और आपकी कितनी तैयारी है वो भी आप चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, तो इसमें हम विद द क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखो आपके पास ये फॉर्मेट बना हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन होगा डैश, उसके फंक्शंस होंगे एंड देन डैश उसके वो किसके अंडर में वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज, अब इस स्टेटमेंट में कौन सा, यहाँ पर लास्ट में हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट मैच एक्चुअली में पेयर्स है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड इट्स फंक्शन इज एनफोर्समेंट ऑफ फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसके कुछ फंक्शंस एंड वो वर्क करता है अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसके कुछ फंक्शंस हैं, एनफोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। ये अंडर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, थर्ड आपका स्टेटमेंट कहता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, जो कि जिसकी कुछ फंक्शंस हैं, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट tax officers for better policy and nabbing tax evaders। ठीक है, ये अंडर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, तो अब इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो एक। आई होप आपने एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट नाउ। द सॉल्यूशन सेज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक है, बिकॉज जो फर्स्ट था उसमें इन्होंने कहा था कि इसका किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताया था, जो कि नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। बेसिकली द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट। आपका ये जो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंडर में ही था, फंक्शन अंडर
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही था, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर में करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, वाइल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा ऑपरेट्स अंडर CBIC, बिग डेटा एनालिटिक्स इज हैंडल्ड बाय सेपरेट बॉडी, ठीक है। जो बिग डेटा है एनालिटिक्स है वो DGARM, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट होगा, जो कि सेकंड वन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। लेट्स सी, इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, 3 ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द वाला भी करेक्ट नहीं है, ओनली 1, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये ना सोचो कि ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए था, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए नहीं, ये एक्चुअली कितने उसमें से करेक्ट थे ये बताना था, ठीक है। तो ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेइज इज अंडर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट्स। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है पंचायत at the intermediate level exist in all states, ठीक है। And the second statement says to be eligible to be a member of panchayat and intermediate level a person should attain the age of 30 years, ठीक है। And the third statement says the chief minister of state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate levels and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and panchayats at the intermediate level, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, रिमेंबर ये चीज जरूर पढ़ें कि हमसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है करेक्ट, आप वो ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हो। लेट्स चूज योर ऑप्शन। आई होप यू हैव चूजन अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। ऑल द थ्री आर इनकरेक्ट, सॉरी ऑल द थ्री आर एक्चुअली करेक्ट। तो हमें इसमें नॉट करेक्ट वाले में चूज करना है डी, एक्चुअली डी, सभी इनकरेक्ट हैं, ठीक है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स थे सब इनकरेक्ट हैं, बिकॉज स्टेटमेंट 1 से इन स्टेटमेंट 1 आर्टिकल 243B allows the 3-tier panchayat raj but exempts states with population of less than 20 lakhs having intermediate block level panchayat, so not all states have them, ठीक है। Second statement also is wrong because as per article 243F the minimum age to contest panchayat elections is 21 years, not actually it was mentioned in 30 years, I think, yeah, 30 years, not 30 years, ठीक है, it's 21 years, okay। And the third statement is also incorrect because article 2431 says the governor नॉट द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर कंस्टिट्यूट द स्टेट फिनेंस कमीशन टू रिव्यू द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही इनकरेक्ट होंगे, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट है। आई होप आपका करेक्ट ऑप्शन आपने चूज किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर स्पीकर एंड लोकसभा। Let's see all the three statements. The three statement is the first statement says on the dissolution of the house of people the speaker shall not vacate his her of office until intermediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution, ठीक है। And the second statement says according to the provisions of Constitution of India a member of the house of the people on being elected as speaker shall resign from his her political party immediately, okay। And the third statement says the speaker of the house of the people may be removed from his her office by resolution of the house of the people passed by majority of all then members of the house provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the of the intention to move the resolution, ठीक है। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, प्लीज चूज योर ऑप्शन। आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया होगा। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट।
in the solution, the first and third option is correct actually. The second option is incorrect. Let's see why. Because in first statement, as per article 94, the speaker does not vacate office upon dissolution of the Lok Sabha, and it remains until the first sitting of a new house. Okay. The second statement is incorrect because there is no constitutional requirement for speaker to resign from their political party upon election. The 10th schedule attempts exempts the speaker from disqualification under the anti-defamation sorry anti-defection law. I think it is defection. Let's remove it for a while to check. Yeah, and anti-defection law. Okay, ठीक है. The third statement is also correct here. The speaker can be removed by a resolution passed by an effective majority, or obviously with 14 days of notice as per article 94 C, जो कि यहाँ पे 14 days of notice ही लिखा था. So option C is correct here. I hope आपने सही किया होगा. Let's move to the next question now. The next question is under ordinance making powers. ठीक है. इसमें अब आपके पास ये तीन statements दिए हुए हैं. Let's read the statement. First statement says an ordinance can amend any central act. ठीक है. Second statement says an ordinance can abridge a fundamental right. ठीक है. Abridge a fundamental right. ठीक है. The third statement says an ordinance can come into effect from back date. From a back date. Okay. ठीक है. तो let's choose your options now. I hope आपने correct option choose किया होगा. Let's move to the solution part. The solution says actually the first statement is correct and the second statement is incorrect and the third statement is also correct. Okay, let's see why. Because as per the first statement, as per article 123 for president and article 213 for governor, an ordinance has same effect as a law and can amend or repeal existing laws, including central acts subject to constitutional provisions. Okay, the second statement is incorrect because ordinance are considered law under Article 13 uh, and cannot violate fundamental rights. As per Article 13(2), the state shall not make any law that abridge fundamental राइट्स. ये तो वैसे भी गलत ही होना था. ठीक है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज मतलब ये कॉमन सेंस से भी आप गलत कर सकते थे मार्क. बट द थर्ड स्टेटमेंट सेज retrospective application of laws is permitted under legislative powers and this applies to ordinance 2. However, criminal laws cannot be applied cannot be applied retrospectively due to article 21. मैं सारे आर्टिकल्स को भी ज़रूर मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज आपको हो सकता है इन सब की ज़रूरत कभी पड़ सके. दूसरे समय पे कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी चेंज करके पूछेगा तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा. ठीक है. तो इसका ऑप्शन सी सही है. ठीक है. फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल स्टेटस. ठीक है. स्पेशल स्टेटस के ऊपर है. यहाँ पे स्टेट्स के बारे में लिखा है एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. लेट्स सी वो करेक्ट है कि नहीं. अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट. ठीक है. एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स. ओके. द कैपिटल मतलब इसका ईटानगर आपको अगर पता है तो उसको क्या वो एक फोर्ट के नेम पे दिया गया था और उसके पास क्या 2 नेशनल पार्क्स हैं या नहीं. ठीक है. तो ये करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपको मार्क करना होगा. नागालैंड, द सेकंड स्टेटमेंट से the state came into existence on the basis of a constitutional amendment act. The third says Tripura, initially a part C state, it becomes a centrally administered territory with the reorganization of states in 1956 and later attained the status of full-fledged state. ठीक है. करेक्टली मैच्ड आपको चूज करना है. लेट्स सी आप कौन सा चूज करते हो. I hope आपने choose कर लिया होगा and correct choose किया होगा. Let's move to the solution part. The solution says pair 1 is correct because as I said, Itanagar is named after Ita Fort. ठीक है. ये fort के नाम पे ही रखा गया था, which means a fort of bricks. ठीक है. कभी पूछा जाए कि Ita Fort
का मतलब क्या है, या फिर ईटानगर क्या रखा गया है किस फोर्ट के नाम पे, तो उसका नाम है ईटा फोर्ट, विच मीन्स फोर्ट ऑफ ब्रिक्स। द स्टेट ऑल्सो हैव 2 नेशनल पार्क्स, दोनों नेशनल पार्क का नाम आप याद कर सकते हो, नमडाफा एंड मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, दोनों नेशनल पार्क्स हैं और दोनों ही यहाँ पर हैं। ठीक है, लेट्स सी दी, ओके, तो ये सही ऑप्शन था। Let's see the next option, which was incorrect, because pair 2 Nagaland was created through the State of Nagaland Act 1962. ठीक है, मैं एक्ट अगेन, मैं जैसे मैंने बोला कि मैं आर्टिकल्स एक्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मेंशन कर रहा हूँ, ताकि ये आपको हेल्प कर सके आपके प्रिपरेशन के लिए। नॉट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, although Article 371A was added by the 13th constitutional amendment, it was to grant special status, not to create the status. Hence, this part is incorrect. Okay. सो लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन नाउ। मैं रिमूव कर दे रहा हूँ चीज़ों को ताकि आप रीड आउट कर सको इन सब चीज़ों को। ठीक है, let's see the third option, which is also correct, because Tripura was part C state, became a union territory after 1956 reorganization, and achieved statehood on 21st January 1972। याद रखना इसको स्टेटहुड का आई थिंक आई मीन वो मिला था ऑन 21st of January 1972 via the North Eastern Area Reorganization Act 1971। ओके, आई थिंक आपने भी बी चूज किया होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओनली 2 of them are correct, first and third, second was incorrect। Let's move to the next question now। Next question is under constitutional roles and governor and president। ठीक है, constitutional roles of governor and president। Okay, let's see what the question says। It has 2 statements now, तो दोनों statements को पढ़ते हैं। First statement says the Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts is in his her own discretion। ठीक है, own discretion। or the second statement says the president of India can of his her own reserve a bill passed by state legislature for his her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। ठीक है, तो लेट्स सी आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया होगा। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट राइट नाउ। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन सेज the first statement is the first statement is correct actually। the second statement is incorrect here, because obviously एक मिनट मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। okay, the first statement is correct, the second statement is incorrect, because as per article 1631 of the constitution provides that the governor shall act on aid and advice of the council of ministers, except in matter where the constitution allows the governor to act at his her own discretion। article 163(2) form confirms 163(2) confirms that if any question arises whether a matter is discretionary, the governor's decision is final। okay, and the third statement is incorrect, because as per article 200 only the governor can reserve a bill passed by the state legislature for presidential consideration। the president cannot, I think I have to remove this now। okay, is it okay, cannot suo motu reserve or take up a state bill on their own। ठीक है, I hope it's clear now। It means the only A option was correct। Let's move to the next question now। Next question is under constitutional provisions। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर्स बनाए हुए हैं, प्रोविजनल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके स्टेटेड अंडर में। आप इन सारे प्रोविजंस को देख सकते हो और उसके स्टेटेड अंडर
किसके स्टेट अंडर में आते हैं वो, क्या वो फंडामेंटल राइट हैं, क्या द डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं, या द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये अगर सही ऑप्शंस हैं तो आपको इसमें से चूज करना है कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट है। लेट्स चूज योर ऑप्शंस फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस which one is correct and which one is incorrect. I hope you have chosen a correct option. Let's move to the solution part now. The solution says all of them are correct actually, because Article 50 under Directive Principle of State Policy Part 4 mandates the separation of judiciary from executives in public services to ensure judicial independence. तो first option is correct. वो उसी के साथ है, पेयर सही था। करेक्ट सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज आर्टिकल 51A(f) अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज ये आता है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच heritage of our composite culture. It's correct. The third option is also correct because it says under Article 24, Article 24 under fundamental rights part 3 prohibits employment of children below 14 years. अच्छा, कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है तो याद रखना ये, ठीक है। तो years in factories, mines or other hazardous activities, ठीक है। I hope it's you have chosen a correct option. यहाँ पे option C is correct. All the three options are correct. Okay, all the three statements are correct. Okay, let's move to the next question now. Next question is under Ministry of Statutory Bodies. ठीक है, तो इसमें भी आपके पास तीन पेयर्स दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन और उनके यूनियन मिनिस्ट्री। तो विच वन ऑफ देम आर करेक्ट, आप इन तीनों में से चूज कर लो। द फर्स्ट वन इज द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। The second is the COIR board is under Ministry of Heavy Industries. The third is the National Center for Trade Information is under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Choose your options wisely. I hope you have chosen a correct option. Let's move to the solution. The solution says all of them are incorrect actually, because the National Automotive Board NAB functions under Ministry of Heavy Industry. ठीक है, ये कॉमर्स के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में नहीं काम करता है। ठीक है, अगेन कोयर बोर्ड भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड ओके सॉरी, कोयर बोर्ड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME के अंडर में काम करता है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज दिया था क्या, या ओके, तो ये गलत था। then third option, the third pair is also incorrect because National Center for Trade Information NCTI operates under the Ministry of Commerce Industry. ये दोनों एक दूसरे से अगर बदल गए होते तो सही हो जाते, ठीक है, बट इधर दोनों ही गलत हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, नन ऑफ देम आर करेक्ट एक्चुअली, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question is under constitutional amendment and federal structure. Actually पूरा एक साथ रीड आउट करने में थोड़ा एफर्ट लग जाता है, तो आई होप आपको ये एफर्ट पसंद आते होंगे। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोस प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड कुछ लाइक करके भी जा सकते हो वीडियो को, बट इफ़ यू विल कमेंट डाउन इट आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट्स। ओके, सो लेट्स सी ये नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। In the ninth question, we have I think pairs also, nahi pair nahi, okay, ठीक है। The first statement says list one union list this in the seventh schedule, second following subjects under the constitution, okay, ठीक है। The second statement says extent of the executive power of state. The third statement says conditions of the governor's office, ठीक है। For us constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than one half of the status is required before presenting the bill to the president of India for assent, ठीक है। इसमें से आप एक ऑप्शन चूज कर लो। लेट्स ओके, आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया होगा। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट नाउ।
says, the solution says first and second is correct, but the third is incorrect. First is correct because uh, it falls under the seventh schedule, ठीक है, and to it amendment to it require ratification by at least half of the state legislature as per the provision to आई थिंक ये प्रोविजन ही होगा, गलत लिखा है, प्रोविजन टू आर्टिकल 368, ठीक है, ये याद कर सकते हो आप। अगेन मैंने ज़्यादा मार्क कर दिया। Let's move to the second statement. This is also correct because extent of the executive power of state covered under Article 73 and 162, which are explicitly mentioned in Article 3682 प्रोविजो। ओके ओके ओके, आई गॉट इट, प्रोविजो ही होगा वो, ऊपर वाला भी, ठीक है। हेंस एनी चेंजेस रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस में ये जो कवर्ड बाय आर्टिकल 158 एंड सेकेंड शेड्यूल नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368, ये 368 के अंदर में नहीं कवर होता है, ये आर्टिकल 158 के अंडर में होता है, ठीक है। तो आई होप आपने भी इसका ऑप्शन ए ही चूज किया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बाकी थर्ड इज इनकरेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज एंड लेजिस्लेटिव privileges। यहाँ पे भी तीन स्टेटमेंट्स है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his her office. Again, the second statement says no criminal proceedings shall be initiated or continued against the governor during his her term of office, ठीक है। The third statement says members of a state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house. Okay, choose your options wisely. I hope you have chosen a correct option. Let's move to the next question. Next question, solution part. And let's move to the solution part. The solution actually says all the three of them are correct. Statement 1, as per Article 361, 361 1, the governor is not answerable to any court for the exercise of powers and duties of office, ठीक है। Second, in the second statement, Article 361 2, no criminal proceedings can be initiated or continued against the governor during their term। अगेन देख रहे हो आप कितने आर्टिकल्स को मेंशन कर दे रहे हैं। अगर इन सब के बारे में भी आप, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप चैप्टर वाइज करते हो तो जो भी चीजें यहाँ पर, अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी या सारे ऑप्शंस के बारे में इन डिटेल देख रहे हैं, उसको भी याद रखने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो, इससे ही आपका बहुत सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 192 94(2), members of state legislature are protected from legal action for anything said or any vote given in the legislature or its committees, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 and 2 and 3 all of them are correct। okay, let's move to the next question। Actually the next question is under Lokpal and Lokayukt Taz। okay, let's see what it says। यहाँ पे 4 statements है, आप रीड आउट करके इसके ऑप्शन को चूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द पावर ऑफ लोकपाल applies to public servants of India but not to the Indian public servants posted outside India, ठीक है। The second statement said the chairperson or a member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only the chief justice of India, whether incumbent or retired, ठीक है, has to be its chairperson। Third option says the chairperson or a member of shall not be person of less than 45 years of age, ठीक है, on the date of assuming office as the
chairperson or member as the case may be. The third says the third statement says Lokpal cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting Prime Minister of India. You can choose your options now. I hope you have chosen a correct option. Let's see the solution part. The solution says first and second is incorrect, and the third statement is correct, and the fourth statement is again incorrect. So the A is uh, only third is correct. So the A option is correct here. Only third is correct because यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट बिकॉज लोकपाल जुडिक्शन में यहाँ पे इंक्लूड्स इंडियन sorry, Lokpal jurisdiction includes Indian public servants posted both in India or abroad. ठीक है. Again, statement 2 is also incorrect. Meanwhile, MPs and MLAs are disqualified. The chairperson can be a former chief justice, a former SC Supreme Court judge, or an eminent person with 25 years of experience, not only the CGI. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट था. तो सिर्फ CGI नहीं बन सकता, ऐसा उसमें गलत लिखा हुआ था. सिर्फ CGI बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. The third statement says correct because a person must be at least 45 years of age, 45 years old on the date of assuming office. The third statement, the last statement is also incorrect because in Lokpal can inquire into allegations against a sitting prime minister with procedural safeguards and restrictions. Okay, let's move to the next question. ये वाला सही होगा because ऐसा नहीं कर सकते तो काफी उसका फायदा उठा सकते थे अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर पैराडनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, लेट्स सी यहाँ के दो स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू पैराडनिंग पावर of the prime president of India. The first statement says the exercise of the power by the president can be subjected to limited judicial review. The second option says the president can exercise this power without the advice of the central government. ठीक है, choose your options wisely. I hope you have chosen. ये करंट अफेयर्स के अंदर में था वैसे. ठीक है, मैं पिछली बार भी नहीं बता पाया था. ये सारे करंट अफेयर्स के थे 10th के बाद से 11th एंड 12th. ठीक है, तो 12th में आप एक ऑप्शन चूज कर लो इसमें से. आई होप यू हैव चूजन अ करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक मैंने रिवील कर दिया इसके सॉल्यूशंस. Let's move to the solution part now. The solution says first statement is correct and second statement is incorrect. Because the first statement is under Article 72, the President's pardoning power can be reviewed by the courts if misused. Example, if it is arbitrary, discriminatory, or in a bad faith, uh, like we have seen in Maru Ram versus Union of India. ठीक है, तो उस केस में भी हम देखे थे उपरू यहाँ पे उपरू सुधाकर. ओके, उपरू सुधाकर केस में. ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इनकरेक्ट एज पर आर्टिकल 74(1). The president must act on the advice of the council of ministers including in cases involving the power of paradigm. ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. Let's move to the next question now. The next question is 13th question, which is also under current affairs, anti-defection law and political party mention in constitution. ठीक है, let's move to the statement now. This first statement says if any question arises as to whether a member of the house of the people has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president's decision in accordance with the opinion of the council of union ministers shall be final. ठीक है, and the second statement says there is no mention of the word political party in the constitution of India. Oh my goodness. Okay, so can you please choose one of the options given here? I hope you have chosen one. Let's see the solution. Both of them are incorrect. Of course, the second was incorrect.
ठीक है. in- okay, why it is incorrect? The first statement is incorrect because under paragraph 6(1) of the 10th schedule, okay, we have given so much of details in our explanation part. तो यहाँ पर जो भी explanation दिया जा रहा है वो काफी details है, वो काफी कुछ आपके useful चीजें हैं. Like यहाँ पे आप दिया है paragraph 6(1) में of the 10th schedule, the reason on disqualification due to defection lies with speaker chairman, not the president. The president is involved in disqualification only under article 102. तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो सकता है? तो वहां पे ये इन्वॉल्व डिस्क्वालिफिकेशन ओनली अंडर टू आर्टिकल 102, एंड दैट टू आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन, नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. Again, second statement is also incorrect because the term political party was added to the constitution by 52nd amendment act 1985. ये काफी फेमस है, आप सबको याद होगा. That's why I just got amazed कि ये statement में कैसे लिख सकता है कि political party was not added. I was not there. ठीक है. It was there from 1985 through the 10th schedule. ठीक है. Anti defection law, so it does appear in the constitution law. ठीक है. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नाइदर वन और नॉर टू, दोनों ही गलत है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज is under federal power and minor minerals. ठीक है. Okay, let's see what statements, what both the statements says. First statement says in India, state governments have no power of for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territories. Second statement says in India, central government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Let's choose your options now. I hope you have chosen a correct one. Let's move to the solution part. So the solution part says first statement is incorrect because under section 15(1) the of the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 MDDR Act, state governments are empowered to make rules for grants of mining concessions for minor minerals with their jurisdiction. ठीक है. उनके jurisdiction के अंदर वो कर सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये गलत ऑप्शन, ये गलत स्टेटमेंट था. द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज एज पर सेक्शन 3E ऑफ MDR, जो कि हमारा पे यहाँ माइंस एंड मिनरल्स वाला माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंडर में द सेंट्रल गवर्नमेंट has the power to notify any minerals as a minor mineral. I hope it's clear. Option D is correct here. 1 is correct, but 2 is incorrect. ठीक है. So let's move to the next question. The next question is under constitutional versus statutory and executive bodies. Again ये current affairs के अंदर में है. इसमें तीन आपके पास रेफरेंस दिए हुए हैं. द इंटर स्टेट काउंसिल, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल्स. उसके बाद कहता है हाउ मेनी ऑफ द अबव एस्टैब्लिश्ड एज पर प्रोविंसेस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेट्स सी आपका क्या ऑप्शन आप चूज करते हो. आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया होगा. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. द सॉल्यूशन सेज ऑप्शन 1 is correct. I mean, 1 is correct and second and third was incorrect because interstate council established under article 263 of the constitution, it is a constitutional body to promote coordination between center and state. National Security Council NSC formed in 1998 by an executive order not mentioned in the constitution. ठीक है. Hence it's an executive body. ठीक है. Zonal council, again set up under the State Reorganization Act 1956, which is a statutory action, not a constitutional provision. ठीक है. तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा. ओनली वन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है, तो सिर्फ एक ही सही है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, करंट अफेयर्स से ये भी 16th क्वेश्चन, क्योंकि 16 क्वेश्चन ही थे. इट्स ए स्केड्यूल्ड एरियाज एंड फिफ्थ स्केड्यूल. यहाँ पे विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इज in a state declared as scheduled area under the fifth schedule, ठीक है. तो यहाँ पर the first statement says the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट वहां से खो देता है और लोकल बॉडी यहाँ पर पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. द थर्ड स्टेटमेंट सेज द यूनियन ओके okay. The third second statement says the union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor. ओके, ये चीज लोकल बॉडी एज्यूम जो कर रही है, मैं उस चीज पे हंस रहा था. ओके, सो यू कैन चूज योर ऑप्शंस नाउ. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस पार्ट. ऑब्वियसली वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. The first statement is as per paragraph 2 of fifth schedule of the state government, fifth schedule, the state government retains its executive powers in scheduled areas. The governor has special, again the governor has special powers like modifying laws, para 5, or establishing a tribal advisory council, para 4, but this does not replace the state's executive authority, ठीक है. Again the second statement is there that the union government cannot take over total administration of fifth scheduled area via fifth schedule, because paragraph 3 allows the union to give directions, not assume control, ठीक है, only under article 356 president's rule, ठीक है. Administration can be taken over which is outside the fifth schedule. तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, नो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी. यू कैन कमेंट डाउन कि इस वीडियो में क्या ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी कि नहीं आपके लिए. हमने पूरे के पूरे 16 के 16 क्वेश्चंस को कवर कर लिया एंड आई एक्चुअली एंजॉयड सॉल्विंग ऑल दोज थिंग्स. आई होप यू ऑल्सो हैव एंजॉयड एंड आपने कुछ नोट्स भी बनाए होंगे इससे और आपके लिए यूजफुल होगा. सो इफ यू कैन लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स एंड क्योंकि ये सारा वीडियो एक ही गो में बनता है, ऑल इन वन गो, तो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड हम ऐसी और वीडियोस में मिलते रहेंगे. थैंक्स फॉर योर टाइम. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.